बहुत शुक्रिया Deputy Speaker साहब. So I appreciate that the Honourable Minister has assured on the floor of the House that she will be taking up this matter जो एक gender gap report पाकिस्तान के हवाले से आई है. We'd also appreciate if she shares the whole process with the Parliament, because ये बड़ा matter of concern है. Undoubtedly पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन ने बहुत contribute किया है और पिछले अदवार में खातून स्पीकर भी रही हैं और फेडरल मिनिस्टर्स भी रही हैं और बहुत important portfolios ख़वातीन ने संभाले, लेकिन साथ ही साथ जेंडर गैप एक रियलिटी है, उसको भी हमें फेस करना है, उसका मुकाबला करना चाहिए. सर, यहाँ पर जो उन्होंने सवाल का जवाब दिया है उसमें उन्होंने कुछ प्रोटोकॉल्स का जिक्र किया है. क्या मिनिस्टर साहब ये बताएंगी कि ये जो प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें सीरियल नंबर 1 और 2 पे दो प्रोटोकॉल्स का जिक्र है, एक है ऑप्शनल प्रोटोकॉल टू UNCRC ऑन सेल ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी, और दूसरी ऑप्शन प्रोटोकॉल टू UNCRC ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट. सर, इसके जो स्टेटसेस हैं उसमें उन्होंने बताया है कि अभी इसके हवाले से रिपोर्ट प्रिपेयर हो रही है और इनिशियल रिपोर्ट की कोई डेट अभी नहीं मेंशन की है. तो ये बताएंगे कि ये रिपोर्ट्स कब तक प्रिपेयर होंगी, बिकॉज एक प्रोटोकॉल 2011 की साइंड है और दूसरी 2016 की है. साथ ही साथ उन्होंने अच्छी बात की है स्कूल्स में जो पीपल हु आर डिफरेंटली एबल्ड उनके हवाले से. लेकिन सर, एक बड़ी तशवीशनाक स्टेटमेंट आई है मिनिस्टर फॉर इंटीरियर जो स्टेट के हैं, उन्होंने कहा है कि 75% गर्ल्स दे टेक ड्रग्स. ये इस्लामाबाद के हवाले से उन्होंने कहा है. दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट. अगर कोई बिल्कुल ड्रग्स है, रिपोर्ट हुई भी है कि ड्रग्स हैं स्कूल्स में और इस पर एक्शन हुकूमत को लेना चाहिए, मगर क्या ये सही है कि आप बच्चियों के हवाले से ऐसी स्टेटमेंट दें? वो मुल्क जो वैसे ही बच्चियों की तालीम को लेकर चैलेंजेस का मुकाबला कर रहा है और एक एनवायरनमेंट है जिसे हम चेंज कर रहे हैं, उसके अंदर अगर वालिदैन को ये रिपोर्ट अखबारात में मिले कि 75% बच्चियां ड्रग्स लेती हैं, तो बहुत घराने ऐसे हैं जो कहेंगे हम ऐसी माहौल में बच्चों को नहीं भेजेंगे. तो हुकूमत को स्टेटमेंट के बजाय एक्शन लेना चाहिए और ये कैटेगराइज कर देना कि 75% गर्ल्स टेक ड्रग्स. जो नाम उन्होंने लिए वो उन्होंने नॉलेज में इजाफा कर दिया है, लेकिन हमें एक्शन चाहिए. इस तरह की मलाइनिंग दुरुस्त है. मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से पर्सनल व्यू भी चाहूंगी कि वॉज दिस फेयर टू द गर्ल्स ऑफ इस्लामाबाद और पाकिस्तान टू फेस अ स्टेटमेंट लाइक दैट? थैंक यू सर. जी, डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा. पहली बात तो जी, ऑप्शनल प्रोटोकॉल की रिपोर्ट इज बीइंग रिवाइज्ड राइट नाउ. आपको पता है, एज आई हैव डिस्कवर्ड कि ब्यूरोक्रेसीज टेक वेरी लॉन्ग. फॉरेन ऑफिस ने कुछ वक्त लगा के हमें वापस अप कमेंट्स भेजे, सो वी आर रिवाइजिंग इट इन व्यू ऑफ दैट बिकॉज द रिपोर्ट विल बी सबमिटेड थ्रू द फॉरेन ऑफिस इवेंचुअली. दूसरी वाली जो रिपोर्ट है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं. वी आर वेटिंग फॉर डेटा. It is extremely difficult to get data from the provinces. आपको याद है, आपकी एक मेंबर ने पिछली दफा जो सिंध प्रोविंस ने हमें डेटा भेजा था, she said ये सारा गलत है and we should reject it. But we have no option. हमने provinces से ही डेटा लेना है ना, especially after devolution. But we are going to expedite it as soon as possible, especially children in armed conflicts. बल्कि जैसे मैंने कश्मीर के हवाले से कहा था, हम फोकस ही नहीं कर रहे ऑन विमेन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और अब हमारी मिनिस्ट्री इंशाल्लाह इस पे फोकस करेगी. जहां तक ड्रग का है, देखें, एक तरफ योर पॉइंट इज करेक्ट कि हमें बच्चियों को नहीं करना चाहिए. पहले तो लेट मी डू अ करेक्शन. देयर वाज सम मिसअंडरस्टैंडिंग. देयर वाज अ सर्वे डन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, एलीट स्कूल्स, ओके. उसमें रिजल्ट जो आया था कि देयर हैज बीन अ 75% इंक्रीज in the number of girls taking drugs. Not that 75% take drugs, but there's a 75% increase in the number of girls taking drugs. देखिए, या तो हम we sweep everything under the carpet. Parents would prefer कि किसी को ना पता चले, जो हमें what we don't see we don't care about. मैं समझती हूँ कोई हर्ज नहीं है आप अलार्म बेल्स अपनी सोसाइटी में भेजें. दिस इज अ बिग इशू. ड्रग्स ऑन कैंपस, शाजिया अगर आप सुन ले, मैं आपको जवाब दे रही हूं. अगर अच्छा, ड्रग्स ऑन कैंपस,
bhai ab aap deputy speaker nahi hai, let the chair check me. Let the chair check me. تو the chair will check me. آپ تو نہیں آپ ڈپٹی اسپیکر درمیان میں آپس میں گفتگو نہ کریں. آپ کا کیا کام ہے؟ بھول جائیں اپنی ڈپٹی اسپیکر آپ. That's between me and the speaker. آپ آرام سے سنیں. ان کا کیا تعلق ہے؟ دونوں حضرات نہیں سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا. It is the chair to tell me off. آپس میں بات چیت نہ کریں. آپ بیٹھ جائیں وہ ٹھیک ہے. آپ بیٹھ جائیں ٹھیک ہے. نہیں, it is between the chair. آپ ان کی بات غور سے سنیں. If the member جس نے میرے سے سوال پوچھا ہے وہ میرا نہیں سن رہی اور جواب دے رہی ہوں تو میں ان کا اٹینشن ڈرا کر رہی ہوں کہ میں آپ کو جواب دے رہی ہوں, آپ کے سوال کا سن لیں. بیچ میں ایکس ڈپٹی اسپیکرز بیچارے ان کو اپنا عہدہ واپس خواب آ رہے ہیں. اینی ہاؤ the point is کہ کیا ہم یہ ڈیٹا بالکل انڈر دا کارپیٹ سویپ کر دیں اور پبلک نہ کریں. I disagree. I think we should send alarm bells. Parents of kids in elite schools don't want to know. They have not bothered to know. آپ کو پتہ ہے schools نے messages بھیجے اپنے ان parents کو کہ جی drugs کا ذرا چیک کریں. Parents don't respond. Maybe this is the sort of alarm bell جس کی ضرورت تھی. Having said that, کل ہماری کیبنٹ میں یہ ایشو ڈسکس ہوا ہے اور اس میں انسٹرکشنز ملی ہیں ایجوکیشن منسٹری کو بھی اور کیا کہتے ہیں انٹیریئر کو بھی کہ پلیز ڈیوائز اے پلان فار دا نیکسٹ کیبنٹ میٹنگ کہ یہ کس طرح ہم ڈرگ کا ایشو ٹیکل کریں بیکاز اٹ از اے بگ ایشو. اسلام آباد میں بہت بڑا ایشو ہو رہا ہے اور مائی سسپیشن از کہ باقی ملک میں بھی اسپیشلی پرائیویٹ اسکولز اور یونیورسٹیز میں یہ بہت بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے. جی شازیہ مری صاحبہ. Thank you. I'd like to thank the Honourable Minister, though this subject did not pertain to her ministry, but I'm glad that she addressed it. There is really no harm کہ آپ لوگوں کو وارن کریں, but وارن کرنے کے لیے ان سینسٹیو ایشوز پہ جو میری تجویز یہ تھی کہ اسٹیٹ آپ مینڈیٹوری کر دیں اسکولز میں ٹیسٹنگ کو, کسی نے نہیں روکا. آپ ایکشنز لیں, اس پرسنٹیج کا اگر آپ کو پتا ہے تو آپ اس کو ہینڈل کریں, نہ کہ ایک ایسے ہی انوائرمنٹ کے اندر ایسی الارم بیلز رنگ کر دیں جو کہ جیسے آپ نے درست کیا اس چیز کو کہ جو پورٹرے کیا گیا وہ ڈفرنٹ ہے, جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے وہ ڈفرنٹ ہے فرام واٹ یو اسٹیٹڈ آن دا فلور آف دا ہاؤس. سو اٹس اے سینسٹیو میٹر. Given that the education already is a challenge in this country, we've achieved a lot, but we want to achieve much more than what we have already done. So please, that I'd like the government to take cognizance of and be careful before releasing statements. They should be correct and according to the data given and how they package it for the people at large. Thank you. جی ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ. I think ایک تو جو پرائیویٹ سیکٹر کی یہ رپورٹ سروے ہوئی تھی they should have also پہلے میڈیا میں ریلیز ہوئی and the media misinterpreted it, so different figures were flying around. But I agree, as a government we should be a little circumspect, but I still agree. I mean, I don't agree that we shouldn't have given the data publicly. We should have said that it is a concern that private schools may 75% increase in girls taking drugs. It's alarming. Dusra, bilkul drug testing, I think we should pass a law that drug testing in schools should be compulsory. Because private schools ko jab tak aap qanoon nahi banayenge, they're under no compulsion. Government schools mein to aap drug testing kar sakte hain. University campuses or private schools mein you will need a law. And I think we should seriously contemplate bringing a law regarding drug testing. We'll talk to the education minister on it. محترمہ نفیسہ خٹک صاحبہ.